Yes, Yes, you are audible. very much. So, good evening, all of you. Welcome to see my vision board. And this is first time I see this dream from childhood, but this is the first time I am presenting to the world, and you are the first one whom with I am sharing my dreams, my vision, and what I want to manifest in my life. So I want to open my vision board presentation with these lines कि मैं हर पल में ईश्वर को महसूस करती हूँ, यूनिवर्स को महसूस करती हूँ और मुझे पता है कि ईश्वर भी मुझे महसूस करते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल जर्नी है जिसे हम लाइफ कहते हैं, उसके हर एक पल में ईश्वर महसूस होते हैं, इसलिए मैं हर पल खुश रहती हूँ। So this is my vision board and I gave it the title, This is my universe. Okay, so this is my title. This is the title of my vision board, and I started with a sky and ended with a jungle because okay, is it visible? Whole yes. Yes, yes, yes. So why I started with sky and ended with jungle because I feel that my father that is showing in both these things. Whenever I miss my father, I look at up sky and I got my answer. And this is the ancestral property. When my father was teenager, because of some reason, ये थोड़ी थोड़ी करके चली गई उनकी फैमिली से. So ये उनका ड्रीम था एक्चुअली में. So I included his dream. So I included my father in this vision board through his dream. So now I am presenting my vision board. I am son of this universe. So why I choose sun? क्योंकि sun सब जगह रेस फैलाता है और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि. So I want to be present everywhere. I want my power, my strength, my capability to every aspect of my life, to everything which I manifest. I am related, I am emotionally attached to it. That's why I choose myself as sun. And I divided my vision board into three parts. First one is prosperity. Everything is prosperity, but first one is wealth. Second one is relationship, and the third one is personal goals. So I want to be a money magnet, and uh, very soon we are shifting to UK. तो मैंने सोचा कि डिफरेंट करेंसी डिफरेंट लोकेशन से मैं मैनिफेस्ट करूं. So I put all the currencies here, including Indian currency. So and sorry, sorry for the interruption. And there are multiple sources of income I want to manifest. And one thing I want to add in that कि मैं ये प्लान कर रही थी बट मैंने सोचा नहीं था कि दिस आइडिया कैन come into existence. So I want to launch my app because I'm a technical person. So this is my dream, and I think and till next year I can launch my app. Because of RYV, I got that vision. And this picture shows alignments. So I want to align with those people who can professionally, emotionally, health wise, and in every sector can uplift me. Okay, and this shows the beautiful relationships in my life. And this star is put by my daughter. So she is my star, and these two ladies, my mom and my daughter, these are shining stars of my life. And as I want to be a best selling author, and just like I am reading books now, I want to break the barrier of languages, and I want my books to be sold in the whole world without the boundaries of language. And please stick to my presentation because I have three surprises for you. Okay, so stick to it till the end. So yes, and my personal goal is achieving health.
health is also wealth. So I want to achieve it. I want to achieve it through traditional yoga methods. I am following it because I have completed Ayurvedic nutritionist course, and now I have full faith towards Indian culture and all the methods we are following from ancestors. So I think through these I can achieve my health back. And then other manifestation is holidays with my family. आज सुबह इस मारिका सॉरी मैम ने बोला था पेरेंटिंग के लिए कि बच्चों के साथ हॉलीडे करना बहुत जरूरी होता है, तो आई थिंक कि आई कैन डू दिस विथ माय होल फैमिली. एंड आई एम नॉट अ कार पर्सन. ओके, सॉरी, आई एम नॉट अ कार पर्सन. तो मुझे कार, मेरे लिए किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बस और कार इज नियरली सेम. तो जब मैंने स्वदेश देखी थी तो शाहरुख खान के पास एक वैनिटी वैन थी. तब से मुझे एक है ड्रीम कि अगर मेरे पास हो तो वैनिटी वैन हो जहाँ पे मैं आराम से बैठ के बुक्स पढ़ सकूं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं. तो इफ आई गॉट अ चांस, इफ आई हैड टू चूज बिटवीन कार और वैनिटी वैन, I will go for vanity van. So that's why I put it here. And okay, now it's the time for the first surprise. So there is a door. You can see the door. Yes. Yes. So this door is for the healthy life. So I'm opening this door. Yes. This door depicts organic food is the way to healthy life. What we eat, we become. So it food plays important role in our life. So after completing the nutritionist course, I give more priority to organic food. And when I get back this land, I will convert it into organic farm, so that not only my family got this organic food, but I can serve this food to other as well. So द नेक्स्ट थिंग इज, जो भी आपको मिलता है, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको वापस भी करना होता है. सो नाउ इज माय पार्ट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड नेचर. सो ड्यूरिंग कोविड व्हाट आई थिंक कि मुझे जो हॉस्पिटल में लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो टेक केयर करते हैं वो शायद खाने पीने के बारे में इतना नहीं सोच पाते, वो केयर और मेडिसिन में ही उलझे रहते हैं. तो दैट टाइम आई गॉट एन आइडिया कि हम फूड ट्रक ले सकते हैं. फूड ट्रक ही क्यों, कैंटीन क्यों नहीं. तो फूड ट्रक मूवेबल होता है, तो वो एक साथ 2 या 3 नियर बाय हॉस्पिटल्स को कवर कर सकता है. So that's why if I got that much amount so that I can serve the society, first thing I will do is scholarship, but second thing I will do a buy food trucks especially for the government hospitals, क्योंकि वहाँ के लोगों को ही अच्छा खाना नहीं मिल पाता है. तो if by God's grace I got that, तो मैं food truck की chain start करूंगी and that is free of cost. That is the way I want to serve the society. And now time for the second surprise. You see one star, there is second star. Okay, so Yes. I'm opening this star. This star is the life of mine. So this is the second star. आपको दिख रहा है ये? Yes, yes. ये है बच्चे, हमारी अर्थ और बच्चे. तो आई वॉन्ट टू सर्व टू किड्स एज वेल, besides their gender, besides their nationality. I want to do something for kids. Something means मेरा, या फिर तो मैं स्कूल ओपन करूंगी, या फिर अगर मैं उतनी एलिजिबल रही तो ऑर्फेनेज को जाऊंगी मैं, एक होम जहाँ पे मैं उन्हें खाना भी दे सकूं और जैसी एजुकेशन वो चाहते हैं. तो दैट्स माय ड्रीम फॉर किड्स स्पेशली, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं. एंड एज आई एम पेरेंटिंग माय डॉटर, आई कैन सी कि जो हम उन्हें देते हैं उससे 10 गुना हमें मिलता है. तो अगर हम अच्छी चीजें देंगे तो ऑब्वियसली हमें 10 गुना बैक मिलेगा. अगर हम एक भी गलत चीज, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस या बैड एनवायरनमेंट अगर उन्हें देंगे
तो वही हमें 10 गुना वापस मिलेगा. दैट्स व्हाई आई वांट टू यू नो for next generation I want to do something, so that's also in my plan. If by God's grace ये वाला पार्ट मेरा बहुत अच्छा रहा, जो मुझे ऐसा लगता है RYB टीम के कारण हो जाएगा, I am able to manifest, then I will definitely go for this. So this is all my presentation, and it's time for third surprise. Okay, so I am the sun. I want to manifest prosperity, break the barriers of language, want to get financial freedom, so want to serve the society, want to serve the nature, want to get the alignments, and want to get multiple source of income through technology. तो हमारे वहाँ एक कहावत है कि काल चक्र जब चलता है तो सारी चीजें कंप्लीट होती हैं. चक्र का मतलब होता है कंप्लीटनेस. तो ऐसे ही जब मेरी लाइफ का साइकिल चलेगा तो मुझे लगता है मैं ये सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाऊंगी. तो दिस इज माय प्रेजेंटेशन, और मैं इसको एंड भी उसी चीज से करूंगी कि यूनिवर्स इज ऑलवेज वॉचिंग यू. what you want to manifest, what you thought, every minute, every moment, it is watching you just like you are watching the sky. So feel the happiness, get the happiness, and return back the happiness. Thank you so much.